Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Welcome to the lecture 3 of this lecture series in which we are discussing the biotechnological aspects of product development. In the previous lectures we have discussed the production and purification strategies for biopharmaceutical formulations, as well as we have discussed the delivery challenges which are associated with the formulation of biomacromolecule drugs and the properties of non-parental routes of administration with respect to systemic delivery of biotechnology based pharmaceuticals. We have also discussed the protein stability and the major degradation pathways of peptides in proteins, which are physical degradation pathway and chemical degradation pathway. In the last lecture, we have discussed the physical stability of the proteins and where we discussed the denaturation, aggregation and fibrillation and adsorption. In this lecture, we will be discussing the chemical stability of the proteins as well as the delivery approaches and advances in biopharmaceutical drug delivery. Let's begin our discussion with the chemical stability of proteins. The major pathways of chemical degradation are, among others, hydrolysis and oxidation. An unfolded polypeptide chain in a protein is more prone to chemical degradation than the native and folded protein. The chemical degradation reactions may be modifications involving changes in the covalent bonds, for example, deamidation, oxidation, or disulfide bond shuffling, and the reactions are usually irreversible. The breaking of peptide bonds is referred to as proteolysis and can often lead to extensive configurational changes. The amino acid and amino acid sequences that are essentially prone to chemical alterations or to cause physical alterations are listed here. In addition to the formulation strategy to prevent degradation is included. Hydrolysis most frequently occurs in the side chains of asparagine and glutamic acid and the peptide bond at the C-terminal side of aspartic acid and proline. Hydrolysis involves the reaction of water and can lead to deamidation. The pH has a huge influence on the deamidation rates, since the rate is much slower at acidic pH than at neutral pH or alkaline pH. Deamidation does not always have an effect on the biological activity of the protein, but it may affect, for instance, the clearance rate and thereby also the efficacy of the protein. Oxidation is one of the most common degradation pathways of proteins. The amino acids more likely to be influenced are those with sulfur, like cysteine and methionine, and those with aromatic rings like histidine and tryptophan and tyrosine. The underlying mechanisms involve oxygen and reactive oxygen species which react with the protein or peptide. The reaction occurs with or without catalysts such as metal ions and it is pH dependent. The reaction occurs with or without catalysts such as metal ions and it is pH dependent. The reaction is also catalyzed by light and is then referred to as photodegradation or photooxidation. The amino acids that primarily undergo photooxidation are abbreviated as TRP or tryptophan, or they are tyrosines or phenylalanine, or they may be cysteines.
Other chemical degradation pathways include beta elimination, which can lead to the racemization and disulfide exchange reactions. The amino acids that may undergo beta elimination include cysteine, serine, and threonine, phenylalanine, and lysine, and occur especially at alkaline pH. The reduction and oxidation of the disulfide bonds are often accompanied by a considerable change in the protein conformation. An example is the secondary structure of insulin that is disrupted or completely lost when the disulfide bonds are broken. This disulfide bond disruption or interchange can also result in an altered three-dimensional structure and therefore a possible loss of activity or aggregation. मेजर पाथवेज केमिकल डिग्रेडेशन के तमाम पाथवेज में से हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेशन के पाथवेज हैं. अनफोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन के अंदर ज़्यादा प्रोन होती है केमिकल डिग्रेडेशन से व्हेन इट इज़ कंपेयर्ड विद द नेटिव या फोल्डेड प्रोटीन. केमिकल डिग्रेडेशन रिएक्शंस मोस्टली मॉडिफिकेशंस होती हैं जो कि इन्वॉल्व करती हैं चेंजेस इन कोवेलेंट बॉन्ड्स, जैसा कि डीएमाइडेशन है, ऑक्सीडेशन है, डाइसल्फाइड बॉन्ड कपलिंग है, और इसके अलावा ऐसे रिएक्शंस हैं जो यूजुअली इरिवर्सिबल होते हैं. पेप्टाइड बॉन्ड्स का ब्रेकेज को हम प्रोटियोलाइसिस कहते हैं और ये लीड कर सकता है एक्सटेंसिव कन्फिगरेशनल चेंजेस को. अमाइनो एसिड्स और अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस जो स्पेशली प्रोन होते हैं केमिकल ऑल्ट्रेशन के साथ, वो कॉज करते हैं फिजिकल ऑल्ट्रेशंस भी. हाइड्रोलिसिस मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर होती है साइड चेन्स में कुछ अमाइनो एसिड्स की, जिनके अंदर एस्पार्जीन है, इसके अलावा ग्लूटामीन है, और पेप्टाइड बॉन्ड्स सी टर्मिनल साइट्स के ऊपर हाइड्रोलिसिस होती है पेप्टाइड बॉन्ड्स में एस्पार्जीन की और प्रोलीन की. हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व करती है वाटर के साथ रिएक्शन और ये लीड कर सकती है टू डीअमाइडेशन. पीएच का एक इन्फ्लुएंस है ऑन डीअमाइडेशन रेट्स बिकॉज रेट डीअमाइडेशन का स्लोअर होता है एसिडिक पीएच के ऊपर, जबकि ये हायर होता है न्यूट्रल या अल्कलाइन पीएच के ऊपर. डीएमाइडेशन हमेशा इफेक्ट कॉज नहीं करती बायोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर प्रोटीन की, लेकिन ये इफेक्ट कर सकती है क्लियरेंस रेट को, और क्लियरेंस रेट को इफेक्ट करने के साथ साथ ये प्रोटीन की एफिकेसी के ऊपर भी इफेक्ट कॉज कर सकती है. ऑक्सीडेशन एक मोस्ट कॉमन डिग्रेडेशन पाथवे है प्रोटीन्स का. अमाइनो एसिड्स जो मोर लाइकली इन्फ्लुएंस होते हैं ऑक्सीडेशन से वो अमाइनो एसिड्स हैं जिनके पास सल्फर ग्रुप होता है, लाइक सिस्टीन या मीथियोनाइन, या फिर वो अमाइनो एसिड्स जो एरोमेटिक रिंग्स रखते हैं जैसे कि हिस्टिडीन, इसके अलावा टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन. अंडरलाइंग मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व करते हैं ऑक्सीजन को और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को जो रिएक्ट करती हैं प्रोटीन के साथ और पेप्टाइड के साथ, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर होता है. जो रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट अकर होता है या विद कैटलिस्ट अकर होता है, जैसे कि मेटल आयंस या फिर ऐसे रिएक्शंस जो पीएच डिपेंडेंट होते हैं, ये रिएक्शंस इन कैटलिस्ट के अलावा लाइट से भी कैटलाइज हो सकते हैं, और इन रिएक्शंस को जो लाइट से कैटलाइज होते हैं उन्हें हम रेफर करते हैं फोटो डिग्रेडेशन या फिर फोटो ऑक्सीडेशन. अमाइनो एसिड्स जो प्राइमरीली अंडरगो करते हैं फोटो ऑक्सीडेशन को, उनमें ट्रिप्टोफैन्स हैं, इसके अलावा टायरोसिन है, इसके अलावा फिनाइल एलानिन है और सिस्टीन्स हैं. ये 4 अमाइनो एसिड्स हैं जो फोटो ऑक्सीडेशन करते हैं. इन केमिकल डिग्रेडेशन पाथवेज के साथ साथ एक और केमिकल डिग्रेडेशन पाथवे है जो बीटा एलिमिनेशन करता है.
जो कि लीड करती है टू रेसिमाइजेशन और डाइसल्फाइड एक्सचेंज रिएक्शंस की तरफ। अमाइनो एसिड्स जो अंडरगो करते हैं बीटा एलिमिनेशन, इनके अंदर सिस्टीन्स हैं, सेरीन है, थ्रियोनाइन है, फिनाइल एलालीन है और लाइसीन है। और ये स्पेशली बीटा एलिमिनेशन अकर होती है एट अल्कलाइन पीएच। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की ऑफन अकम्पेन्ड होती है विद कंसिडरेबल चेंज इन द प्रोटीन कॉन्फर्मेशन, और इसकी एग्जांपल है सेकेंडरी स्ट्रक्चर इंसुलिन का, जो डिसरप्ट होता है और कम्प्लीटली लॉस्ट कर देता है जब डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड डिसरप्शन या फिर इंटरचेंज ऑल्टर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर रिजल्ट करती है। इसी वजह से एक पॉसिबल लॉस ऑफ एक्टिविटी या एग्रीगेशन कॉज करती है। If you see this chart shows certain amino acid sequences with the mechanism of degradation and formulation strategies. For example, amino acid sequences that contain cysteine and cysteine groups, they undergo disulfide reduction, and the formulation strategy to prevent this is the addition of surfactants, polyalcohols and other excipients. Lysine and threonine amino acids, when they are present, they can undergo copper-induced cleavages, which can be prevented by the addition of chelating agents in the formulation. The amino acids like GLU, which is glutamic acid, and ASP, which is aspartic acid, they undergo deamidation degradation pathways, and the formulation strategy to prevent the deamidation is to maintain the pH from 3 to 5. Aspartic acid proline and aspartic acid tyrosine, these amino acids undergo hydrolysis reactions, and the formulation to prevent hydrolysis reaction is to maintain the pH above 7. The amino acids asparagine and the amino acid GLN, that is glutamine, they as well undergo hydrolysis reaction, and the formulation strategy is to maintain the pH greater than 7. Amino acids like tryptophan, methionine, cysteine, tyrosine and histidine, they undergo oxidation reactions. The formulation strategy is to maintain the pH of the formulation less than 7. Methionine amino acids can also undergo oxidation reactions, and the formulation and strategy to prevent the degradation from oxidation is to protect the formulation from the oxygen. Tryptophan amino acids can also undergo photodegradation, and the formulation strategy is to protect the formulation from light. Beta elimination reactions can occur in amino acids like cysteine, serine, threonine, phenylalanine and lysine, and the formulation strategy is, that was all about the protein stability. Let's now move to the second part of this lecture, which is the delivery approaches and advances. For a successful formulation and delivery of peptides and proteins, it is crucial that the formulation scientist has a thorough knowledge of several factors like the physical and chemical stability of the drug compound, the content of well-defined and selective excipients in the formulations, and optimize storage stability and naturally the route of administration being well chosen, meaning that the absorption barriers can be overcome in a successful manner. Since the administration routes are mainly parenteral, the formulation has to be injectable.
An injectable formulation requires specific excipients, ways of preparations, and formulation types like liquid suspensions or solid formulations. In the development of protein drugs, various formulation principles are used. Here we are going to study the various formulation principles which are used in the liquid formulations and solid formulations of proteins. Liquid formulations may include unbuffered solution or injection when the protein is insulin or insulin glargine. It is available as Lentus, which is prepared by Sanofi Aventis and is used for diabetes mellitus. The excipient in this unbuffered solution for injection includes zinc chloride, M-cresol, glycerol, hydrochloric acid, sodium hydroxide, water for injection, and the pH is 4. एक सक्सेसफुल फॉर्मुलेशन के लिए और पेप्टाइड्स या प्रोटीन्स की डिलीवरी के लिए ये क्रूशल है कि फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट के पास थॉरो नॉलेज हो सेवरल फैक्टर्स की, लाइक फिजिकल और केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग कंपाउंड. इसके अलावा कंटेंट वेल डिफाइंड और सिलेक्टिव एक्सिपिएंट्स का फॉर्मुलेशन के अंदर क्या है, और ऑप्टिमाइज स्टोरेज स्टेबिलिटी कंडीशंस क्या है, किस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को चूज किया जाएगा डिलीवरी के लिए, और इसके अलावा एब्जॉर्प्शन बैरियर्स क्या होंगे जो कि ओवरकम करने हैं एक सक्सेसफुल मैनर में. क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन रूट्स मेनली पेरेंटल होते हैं, फॉर्मुलेशन मोस्टली इंजेक्टेबल होती है. इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशंस में स्पेसिफिक एक्सिपिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और वेज ऑफ प्रिपरेशन और फॉर्मुलेशन टाइप्स वेरी करती हैं depending on the liquid or suspension or solid formulation. प्रोटीन ड्रग्स की डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट फॉर्मुलेशन प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं. इस टेबल के अंदर आपको डिफरेंट फॉर्मुलेशन प्रिंसिपल्स नजर आ रहे हैं इंडिकेशंस और एक्सिपिएंट्स के साथ. सो लेट्स सी. द फर्स्ट वन इज अनबफर्ड सॉल्यूशन for injection, which is a liquid formulation. The protein here is insulin glargine. It is available as form of Lentus by Sanofi Aventis and indicated for the treatment of diabetes mellitus. The excipients include zinc chloride, M-cresol, glycerol, hydrochloric acid, sodium hydroxide, water for injection, and the pH is 4. The suspension for injection includes a protein which is a mixture of fast-acting insulin and long-acting insulin. It is available as Mixtard by Novo Nordisk and indicated for the treatment of diabetes mellitus. The excipients include protamine sulfate, zinc glycerol, disodium phosphate dihydrate, phenol, and metacresol. Liquid solution for inhalation includes Dornase sulfa, which is available as Pulmozyme by Roche and is indicated for cystic fibrosis. The excipients include sodium chloride, calcium chloride hydrate, and water for injection, and the pH is maintained at 7. The last formulation for liquid part is liquid concentrate of for 4 administration. Which is for factor 4 administration, which is Rituximab, which is a glycosyl IgG1 kappa immunoglobulin. It is available as Maptra by Roche and it is indicated for B-cell NHL. The excipients include sodium chloride, sodium citrate dihydrate, polysorbate 80, water for injection, and pH is maintained at 6.5. Solid formulations include 4 types of drugs like 3 types of drugs like kit for implant, lyophilized powder for injection, and lyophilized powder for injection of factors. Kit for implants include a protein which is called as recombinant human bone morphogenetic protein 2, which is available as Inductose by White and is indicated for induction of new bone at the site of implantation.
The formulation strategy includes certain excipients like water for injection, glutamic acid, glycine, sodium chloride, sodium hydroxide, polysorbate 80, sucrose, absorbable collagen sponge. Lyophilized powder for injection includes interferon beta 1b, which is available as betaferon by Schering AG, and it is indicated for multiple sclerosis. It includes human albumin, dextrose, sodium chloride solution for reconstitution. Lyophilized powder for injection includes recombinant human anti-hemophilic factor 8, which is available as cogenate, and it is indicated for hemophilia A and is made by Bayer. The excipients include sucrose, histidine, glycine, sodium chloride, calcium chloride, water for injection of European Pharmacopoeia. So that's all about the biopharmaceutical based product development or biopharmaceutical aspects of product development. I hope you have understood the concepts and mechanisms involved in it. Thank you for listening to this lecture. Take care of yourself, and we'll start a new topic in the next class that is not a part of pharmaceutical biotechnology but a part of pharmaceutical technology. So see you in next lecture. Take care of yourself and everyone around.